अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमेशा साल के एंड पे इस वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ राउंड अप ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम 2021। इट्स गोइंग टू बी माय ईयरली फेवरेट्स। आज हम बात करेंगे उन तमाम प्रोडक्ट्स की जो 2021 में मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने और आने वाले कई सालों तक होपफुली मेरी कलेक्शन का हिस्सा रहेंगे। चाहे ये प्रोडक्ट्स इस साल में लॉन्च हुए हों या ना लॉन्च हुए हों, आई फेल इन लव विद दीज प्रोडक्ट्स इन द ईयर 2021। सो हम इनके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी कैटेगरीज को आज ही कवर करूंगी। सो मैं स्प्लिट करूंगी इस वीडियो को दो डिफरेंट पार्ट्स में। आज हम बात करेंगे फेस एंड चीक प्रोडक्ट्स की और इसके साथ साथ मैं अपने फेवरेट ब्रशेस भी आपसे शेयर करूंगी। पार्ट 2 में हम बात करेंगे फेवरेट आई प्रोडक्ट्स की, फेवरेट लिप प्रोडक्ट्स की, फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स की एंड फेवरेट हेयर केयर प्रोडक्ट्स की। सो इस तरह हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। A lot of these products, the majority of these products are Pakistani products, hence the title of this video. लेकिन कुछ products इसमें से international ऐसे हैं जो like they were my favorites and they are worthy of being mentioned in a video like this. So मैं वो भी mention कर दूँगी इस वीडियो में। So चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं कि what were your favorite products for 2021. 2021 में आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से products आए हैं जो आप अपने आप को you see yourself using these products for many years to come. Let me know your favorite makeup products, skincare products, even perfumes. Like I am all about perfumes these days. So let me know what was your favorite scent for the year 2021. So chale, let the conversation going in the comments. And without further ado, let's jump right into this video. तो जिस फर्स्ट कैटेगरी को मैं टैकल करने जा रही हूँ वो है प्राइमर्स। प्राइमर्स में मैं 4 डिफरेंट प्राइमर्स का जिक्र करूँगी। 2 ऑफ दीज आर फ्रॉम द सेम ब्रांड एंटाइस कॉस्मेटिक्स। इनके 2 प्राइमर्स ऐसे हैं जो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। फर्स्ट वन बीइंग देयर बबल गम प्राइमिंग पोर्शन। इस पर मैं बहुत डिटेल में इंस्टाग्राम पे रिव्यू दे चुकी हूँ, अपनी लास्ट फेवरेट्स वीडियो में इसका जिक्र कर चुकी हूँ। सो आई वॉन्ट गो टू मच इन टू डिटेल अबाउट दिस प्रोडक्ट, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि इफ़ यू हैव रियली ड्राई स्किन तो इससे बेहतर प्राइमर आपके लिए पाकिस्तानी मार्केट में एटलीस्ट मैंने ट्राई नहीं किया। आपकी स्किन बहुत ग्लोई हेल्दी फील करेगी, अंदर तक हाइड्रेटेड फील करेगी, मेकअप ऊपर बहुत आराम से चला जाएगा, यानी आपके ड्राई पैचेस पता भी नहीं चलेगा। हाउ योर मेकअप ग्लाइड्स ऑन टॉप ऑफ दिस। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर्स फॉर पीपल विद रियली ड्राई स्किन। जो दूसरा प्राइमर है फ्रॉम एंटाइस कॉस्मेटिक्स, दिस इज देयर 24K गोल्ड मॉइस्चर पोर्शन। ये आपको लाइक इफ़ यू हैव नॉर्मल स्किन, इफ़ यू हैव स्लाइटली ऑयली स्किन एंड इफ़ यू हैव स्लाइटली ड्राई स्किन, तो ये काफ़ी यूनिवर्सल प्राइमर है अक्रॉस द बोर्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ये मैंने रिसेंटली ख़रीदा है, सो आई एम काइंड ऑफ चीटिंग बिकॉज आई रियली फेल इन लव with this primer at the end of 2021, but I could not mention it in this video इसलिए क्योंकि I've been obsessing over the bubblegum one for so many months, लेकिन ये इसको भी क्रॉस कर गया है। like this one is even better इसलिए क्योंकि जो इसका ग्रीजी सा टेक्सचर है, people with extremely dry skin will appreciate and enjoy it, लेकिन इसमें आपको वो ग्रीजी टेक्सचर नहीं मिलता है। so it gives you all the good nice juicy properties of the other one without that greasy texture. या आपकी स्किन को ब्लर करता है या आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है हल्का सा, इतना स्मूथिंग है कि बड़े मज़े से इसके आप जो भी ऊपर अप्लाई करेंगे दैट विल ग्लाइड ऑन टॉप ईजीली। आपके कोई ड्राई पैचेस हैं उनके ऊपर मेकअप बहुत अच्छे से टिक जाएगा। लाइक दिस लिटरली इज़ like all-rounder kind of primer. Now with people with really oily skin, मैं ये आपको 100% conviction से नहीं बता सकती मेरी स्किन ऑयली नहीं है, इसलिए obviously ऑयली स्किन वाले लोगों को मैं कवर करना चाहती हूँ, बट मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं हो सकता ऑयली स्किन के बारे में। बट मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए ग्लैम गर्ल्स का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके पोर्स को अच्छे तरीके से कवर कर देगा, आपकी स्किन को स्मूथ कर देगा, आपका मेकअप ऊपर लग के बहुत एयर ब्रश लगेगा। एंड आई डू रियली एन्जॉय दिस फॉर पोर ब्लरिंग पर्पजेज़। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो इस प्राइमर को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। नाउ फॉर द पीपल जिनकी स्किन तो ऑयली या नॉर्मल है लेकिन उनको ग्लो चाहिए, यू नो दे नीड द ग्लो फ्रॉम विद इन, उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगी फ्लॉन्ट एंड फ्लटर का शेडो ग्लो प्राइमर। ये प्राइमर थोड़ा एक्सपेंसिव है, सो यू डेफिनेटली हैव टू हैव अ लव फॉर हाई एंड प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू बाय दिस। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आई वुड नॉट रेकमेंड दिस फॉर यू। बड़ा नेचुरल सा ग्लो देता है आपको ये स्किन पे। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट ऑन टॉप ऑफ योर फाउंडेशन टू गिव यू दैट अमेजिंग ग्लो फ्रॉम विद इन। बड़ा सटल सा ग्लो है इसमें, बहुत ज़्यादा इंटेंस ग्लो नहीं है। एंड आई डू रियली इन्जॉय इट, बट लाइक इट्स रियली क्विक टू एब्जॉर्ब इनटू द स्किन। फॉरेन स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है। इट्स सो लाइट वेट कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपकी स्किन पे लाइक इफ़ एनीथिंग इज सिटिंग ऑन योर स्किन। सो जो बहुत ज़्यादा लेयरिंग की वजह से
मेकअप के केकी होने का डर होता है वो इसकी वजह से नहीं होता. एंड आई रियली डू एंजॉय दिस प्राइमर. सो इफ़ यू कैन अफोर्ड टू बाय इट एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि आप ऑयली स्किन हैं एंड आपको यू नीड द ग्लो फ्रॉम विद इन बट यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू लुक लाइक एन ऑयल स्लिक, तो फिर दिस काइंड ऑफ प्राइमर इज़ रियली आइडियल फॉर यू. Now Janab, on to my favorite foundation for the year. I have 5 foundations to talk about. I know that's very excessive, लेकिन इस साल मैंने बहुत foundations try किए हैं and I have really fallen in love with 5 of these. So चलिए इनके बारे में बात करते हैं. I have one that's like international. तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं. This is the Rare Beauty Foundation. It's just so natural. इतनी नेचुरल सी फाउंडेशन है, लाइट वेट सी फाउंडेशन है, आपके चेहरे पे आपको फील भी नहीं होती है. आई पर्सनली रियली लाइक माई मेकअप एवरी टाइम आई वोर्न दिस फाउंडेशन. और इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती कि इट जस्ट रियली लुक्स वेरी वेरी नेचुरल. लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अनदर फाउंडेशन जो मेरे पास अभी है विच इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली नेचुरल लुकिंग एंड दैट्स द रिदा ज़ैन फाउंडेशन. अगेन मैंने अपने लास्ट फेवरेट्स वीडियो में बड़ी डिटेल में इसको रिव्यू किया था. इट्स जस्ट द मोस्ट lifelike foundation and that's exactly what it's called their lifelike foundation. और ये ऐसी फाउंडेशन है कि इट विल लुक एक्सट्रीमली नेचुरल. अगर आप प्रॉपरली ग्लैम्ड अप तैयार होना चाहते हैं तो दिस माइट नॉट बी द ऑप्शन फॉर यू बिकॉज इट इज़ रियली वेरी वेरी नेचुरल. मैं पर्सनली वही लुक एंजॉय करती हूँ. इवन शादी के लिए भी दैट्स द लुक दैट आई वांट टू गो फॉर. बट सारे लोग मेरी तरह नहीं होते. अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट लाइक फुल कवरेज ग्लैम्ड अप डॉल्ड अप काइंड ऑफ लुक. सो अगर आप उस तरह के बंदे हैं तो आपके लिए फाउंडेशन नहीं है. लेकिन अगर ऑफिस सेटिंग में या रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए यू नीड समथिंग वेरी नेचुरल, वेरी नाइस, वेरी लाइक समथिंग दैट हैज़ अ नाइस हेल्दी ग्लो टू इट, देन द Rida Zayn फाउंडेशन वुड बी इट फॉर यू. सिर्फ ये बात है कि दिस माइट नॉट बी फॉर यू इफ़ यू हैव वेरी ऑयली स्किन, क्योंकि इसमें हल्का सा ग्लो का फैक्टर है. सो यू माइट नॉट enjoy it if you have very very oily skin. अगर आपकी बहुत ज़्यादा oily skin है तो I will recommend the Beautify by Amna की foundation for you. ये foundation लगा के like something just happens when you apply this foundation. Your face just looks flawless. बहुत खूबसूरत finish है इसका and that's all I can really tell. Like it has this beautiful finish that will make your skin look flawless and perfect and healthy and just beautiful. मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय की इनकी जो ल्यूमिनस फाउंडेशन आई है, मैंने वो ट्राई नहीं की. दिस वन इज़ कॉल्ड देयर रेडियंट फाउंडेशन, लेकिन ये काफ़ी मैटिफाइंग है एंड आई थिंक पीपल विद ड्राई और ऑयली स्किन विल रियली रियली इन्जॉय इट. आई पर्सनली लव दिस फाउंडेशन इवन दो आई हैव ड्रायर स्किन टाइप. दिस इज़ अगेन एन आइटम जिसकी शायद मुझे अभी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि दिस इज़ स्टिल वेरी न्यू टू माई कलेक्शन. शायद अगले साल बात करनी चाहिए. आई डिस्कवर्ड दिस पास्ट मंथ. ये सैफायर की लिक्विड फाउंडेशन. आई एम इन द शेड कैश्यू. And again, just like the Beautify by Amna ki foundation, it just does something to your skin. Your skin looks healthy and nice and beautiful. And I really like this one compared to the Rida Zayn one. क्योंकि इसमें you do look glammed up, you do look dolled up, लेकिन you still don't look cakey. That's what I love about this foundation. If you've been eyeing the Sapphire foundation, आपका दिल कर रहा था इसको लेने का, तो आप ले सकते हैं. I think people of all skin types almost will enjoy this foundation. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा सा सैम्पल लेके किसी तरीके से इसको टेस्ट करके या किसी ऑयली स्किन ब्लॉगर का रिव्यू इस पे देख लें. बहरहाल आई पर्सनली रियली एंजॉय दिस फाउंडेशन एंड आई डू रिकमेंड इट. लाइक इट्स अ नाइस वन. द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ ग्लैम गर्ल्स की रियल सीरम फाउंडेशन. ये मैंने इस साल के शुरू में डिस्कवर की थी. अगर आपको याद हो, अगर आप मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं तो हाई फाइव. मैं अपनी अम्मी के घर गई थी. आई थिंक इट वॉज जनवरी या फेबररी एंड आई व्लॉग्ड during that time. और अम्मा के घर ये डिलीवरी आई थी. सो इट वॉज रियली लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर. इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इवन दो लाइक इट इज़ अ सीरम लाइक फाउंडेशन. अगेन यू कैन नोटिस अ पैटर्न विद माई फाउंडेशन. मेरी फाउंडेशन बहुत थिक और मतलब फुल कवरेज फाउंडेशन मुझे नहीं पसंद. दिस इज़ अ सीरम लाइक फाउंडेशन. इट जस्ट इसको आप उंगलियों से भी ब्लेंड कर सकते हैं. इसको ब्लेंड करने के लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर या कोई लाइक फैंसी टूल्स की ज़रूरत नहीं होती. दैट्स लाइक हाउ blendable it is. ऐसे गायब हो जाती है स्किन में, leaving your skin with the most healthy beautiful finish and extremely natural as well. So there's just something about this foundation. बहुत अच्छी लगती है, बहुत affordable है. Like if you compare it to the Rida Zayn one and all of these other foundations उनके मुकाबले में I think it's 1000 plus. Like उस तरह 1200 की है शायद. Very good price point. I really love this foundation. सिर्फ ये है कि despite being very very natural,
मैंने इसको समर्स में इंजॉय नहीं किया. जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी स्किन ब्रीथ नहीं कर पा रही है. सो दैट इज़ वन थिंग आई नोटिस्ड अबाउट इट. और मैंने ये इस्तेमाल करनी छोड़ दी थी गर्मियों में. अब सर्दी आई है तो अब मैं दोबारा इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और दोबारा उसी तरह इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ. इट इज़ लाइक रियली नेचुरल लुकिंग, वेरी प्रिटी, really affordable, and like day to day के लिए, especially because it is very affordable to day to day के लिए, especially during the winters, I would highly recommend this foundation. For concealer janab, I have 3 that I want to talk about, and like the real big star of the show is ये वाला. This is the Beautify by Amna का Radiant Concealer, and for me this is like no different than Tarte का Shape Tape. This is exactly the same as Tarte का Shape Tape. It's very full coverage, it's very matte, but it does not look cakey. It sets beautifully. It hides everything. It is a very very pretty concealer and I do highly suggest it. उसके अलावा एक कंसीलर जो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, दैट इज़ दी पावर ग्लैम कंसीलर फ्रॉम ब्लिंग बाय नादिया हुसैन. इसका अंडरटोन बहुत अच्छा लगा मुझे. ये इसकी ज़रा येलो सी अंडरटोन थी. सो द वन थिंग दैट आई लव्ड अबाउट इट इज़ कि इसको इस्तेमाल करने के बाद या इसको इस्तेमाल करने के साथ मुझे कलर करेक्शन की हमेशा ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि इट डज कैंसिल आउट दी ग्रे अंडर आइज वेरी नाइसली बाय इटसेल्फ एज वेल. बहरहाल ये फुल कवरेज कंसीलर नहीं है. नेचुरल डे टू डे या कैजुअल से इवेंट्स के लिए दिस वुड बी अ वंडरफुल कंसीलर वेयर यू डोंट वांट टू लाइक हैव अ मास्क अंडरनीथ योर आईज. You just want to cover up some of those dark circles and have some of them come through as well. The last one, again, cheat item, a recent addition to my collection. This is the Note Cosmetics का concealer, Junaid Jamshed का. And मुझे महीने से ज़्यादा नहीं हुआ ये लिए हुए. So again, maybe I'm talking too soon about it. But in this little time that I've used it, it has really made its mark. Again, it's very similar to the Bling by Nadia Hussain का concealer in the sense that ये नेचुरल लुकिंग कंसीलर है. आप डे टू डे के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत आराम से ब्लेंड हो जाता है. इट्स अ वेरी ब्लेंडेबल नेचुरल कंसीलर. तो फॉर डे टू डे आई रियली लाइक इट एंड आई वांटेड टू लाइक टॉक अबाउट इट बिकॉज आई हैव बीन रियली एंजॉयिंग इट. So the next category is face powder. इसमें मैं 3 products recommend करने लगी हूँ. One of these is a loose powder, 2 of these are pressed powders. Loose powders में मैं recommend करूँगी जनाब Glam Girls के loose powders. Glam Girls की I think the unfortunate thing about this brand is they don't pay much attention to their packaging and their branding, जिसकी वजह से इस brand का outlook ऐसे है जैसे it's a really cheap brand. And their prices are very very nice too. तो उसके साथ आपको ये impression आता है कि it's a very cheap brand. But I feel like within the like very ordinary packaging, some of their products are like really stars, like they are diamond in the dust. तो इस किस्म के products हैं. Their loose powders especially, like I compare this one to my Viseart seamless powder, और वो like it's a Viseart product. Viseart is one of my favorite international brands. तो मैं इनके पाउडर को उसके साथ रखती हूँ. That's how like natural looking and beautiful and skin like the finish of these powders I feel like. इनका pink भी है मेरे पास, white translucent भी है, and I enjoy both of them. For a setting powder they're really really nice. Sapphire का loose setting powder मैंने recently ख़रीदा है, वो भी मुझे अच्छा लगा है, लेकिन I've only used it twice, तो इसलिए मैं अभी it was too soon to talk about that. बाकी जिन products की आज मैंने बात की है वो लिए तो मैंने पिछले 1 महीने में, लेकिन I've used them at least 10 times, इसलिए I was confident enough to talk about them in my yearly favorites. Anyways, this next powder that I'm going to talk about is the Power Buff powder from Bling by Nadia Hussain. इसका मैंने जिक्र किया था in my best and worst of Nadia Hussain. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी and देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसको ऊपर लिंक कर देती हूँ. But this is their pressed powder. And ये बड़ा scary सा powder है. Like if you see someone apply this on their face on Instagram or in a video, you would be like, I'm not going to apply that powder because it is a very high coverage powder. Like थोड़ा सा आप इसको उठाते हो तो you get a lot of pigment at once and you're like, that's going to make me look cakey, I'm not going to use it. And that's exactly how I felt when I saw Nadia applying this on her under eyes. But at the same time, after she applied it, तो उसके अंडर आइज इतने फ्लॉलेस और इतने परफेक्ट लग रहे थे और उसकी स्किन इतनी स्मूथ लग रही थी कि आई वाज लाइक रियली इंट्रीग्ड और मेरा दिल किया कि मैं भी ये प्रोडक्ट ट्राई करके देखूँ. सो मैंने काइंड ऑफ एक तुक्के के तहत ये प्रोडक्ट खरीदा था. आई न्यू प्रिटी वेल कि शायद मुझे अच्छा ना लगे, बट
आई मेड द राइट चॉइस. लाइक इतना हसीन ये पाउडर है, आपके अंडर आइज को इतने अच्छे तरीके से कवर भी कर देता है, ब्राइटन भी कर देता है. स्पेशली ये वाला शेड, इन द शेड क्रीम. अगर आप इससे डार्कर शेड लेंगे तो प्रॉब्ली नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व द सेम पर्पस. लेकिन मैं इसको सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ अंडर आइज पे लगाने के लिए. अंडर आइज को हाइड भी कर देता है, ब्राइटन भी कर देता है, केकी भी नहीं लगता, क्रीमी भी होता है. इट्स लाइक सो मैजिकल. बहुत अच्छा पाउडर है. नादिया ने, लाइक नादिया, यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब ऑन दिस पाउडर. आई रियली लाइक इट. The other one that I want to talk about is from Top Face. ये Bonanza Satrangi का brand है and this is their sensitive mineral hydrating powder. तो ये जनाब ऐसा पाउडर है जिसके अंदर बिल्कुल हल्का सा एलिमेंट ऑफ ग्लो है. सो पीपल विद नॉर्मल to dry skin will really enjoy this powder. I love setting my entire face with it. Again, face को बहुत healthy, natural सा glow देता है without making it look cakey. अगर आप खासतौर पे एक फ्लफी सा बड़ा सा ब्रश लेके पाउडर कर लें अपने चेहरे को, तो दिस इज़ रियली गोइंग टू गिव यू दैट वेरी नाइस कम्प्लेक्शन. यू वुड लुक लाइक रियली मेड अप. आपको आप बने सवरे लगोगे बट एट द सेम टाइम केकी नहीं लगोगे, ओवर नहीं लगोगे. एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रेस्ड पाउडर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू चीक प्रोडक्ट्स, यानी ब्रॉन्जेस, ब्लश एंड हाईलाइट्स. ब्रॉन्जेस में तो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है बात करने को, सिर्फ एक प्रोडक्ट है और वो भी टेक्निकली ब्रॉन्जर नहीं है. ये है जनाब मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स का पाउडर ब्लश इन द शेड ब्राउन शुगर. इसके शेड में कुछ ऐसा है कि ये आपके चेहरे को एक खूबसूरत सा शैडो देता है, डायमेंशन देता है. आपका चेहरा चिजल्ड लगता है. फाउंडेशन लगा लेने के बाद जो आपकी शक्ल से शैडोज़ एंड शेप निकल जाती है एंड चेहरा ज़रा चिटा चिटा लगता है, यूजिंग अ पाउडर like this and a shade like this, you really get all of those shadows back. It's dual purpose, it's affordable. I think 650 या 750 का ये ब्लश है शायद. एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड वैल्यू फॉर मनी. अगर आप स्पेशली इसको ब्लश के तौर पे भी इस्तेमाल करो, ब्रॉन्जर के तौर पे भी इस्तेमाल करो, आई रियली लाइक इट एज एन ऑल राउंडर प्रोडक्ट. अच्छा जनाब, ब्लश. आई हैव सो मेनी ब्लश प्रोडक्ट्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं. ब्लश के हिसाब से इट वॉज अ रियली गुड ईयर एंड इट वॉज रियली अ ईयर ऑफ लाइक लिक्विड ब्लश इन पाकिस्तान. बहुत सारे ब्रांड्स ने लिक्विड ब्लशेस लॉन्च किए हैं. 2 क्रीम ब्लशेस दैट हैव रियली स्टूड आउट फॉर मी. सबसे पहले हमारे पास ज़े ब्यूटी की ब्लूम ब्लशेस. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इनकी जो कैंपेन थी दैट रियली कॉट माई आई. आई थिंक इट वॉज द कैंपेन ऑफ द ईयर. आई हैव इट इन 2 शेड्स, 3 शेड्स में टोटल लॉन्च हुए थे. मैंने पहले एक शेड खरीदा, आई रियली लव्ड इट. आई गॉट द अदर शेड. It's just very blendable. It has the right amount of pigment. It's buildable. It's gorgeous. इसके ऊपर अगर आप पाउडर ब्लश लगा लें तो क्या ही कहने, उससे आपकी obviously ब्लश की longevity बढ़ जाती है. I personally, from the packaging, from the colors, everything, I really enjoy these blushes. One thing I would like to say is कि maybe you will get it and you might not enjoy it. उसकी वजह ये है कि my sister got it एंड जो उसका पीस आया था उसमें ब्लश बहुत ड्राई आउट हुआ था. सो शी सेज कि वो जब ब्लश लगाती है तो शी हार्डली गेट्स एनी प्रोडक्ट ऑन हर लाइक डो फुट एप्लीकेटर. सो आई थिंक कि इनकन्सिस्टेंसी के इशूज़ हैं एंड यू माइट नॉट गेट द सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती. पर्सनली द वन दैट आई हैव, आई लव, आई एम obsessed with. The other cream blush that has really made its mark into my collection is Jaclyn Cosmetics ka cream blush. It's an international product and it's like the best stick or cream blush I've ever used. This is the one. Everything from the component, the packaging, the shades, the pigmentation, the creaminess, the blend, the longevity, across the board, everything gets a 10 out of 10 from me on this product. So if you have someone who is coming from the US, or if you like follow a page that's reliable where you can pre-order this, I highly suggest getting at least one of these because it's literally you have not tried a formula like this. Like it just goes on like a lipstick. It blends like a dream. It looks intense, but it's not. It's just the right amount of pigmentation. It's the perfect cream blush. I highly suggest this one. अब आ जाते हैं powder blushes की तरफ and another one from the Jaclyn Cosmetics line. They're Luminous blushes. Boy, what do I say about these? इनका जो Luminous powder है, that has been my favorite for I think I mentioned it in the last year's favorites. इतना वो हसीन powder है, like it gives you the most natural glow. I often use it for my buffing technique. और आपके सारे चेहरे को लाइक इट्स अ वेरी नेचुरल हाइलाइटर. एंड क्या कमाल पाउडर बनाया उसने. एंड बिकॉज दैट प्रोडक्ट वॉज सच अ हिट एंड बिकॉज दैट प्रोडक्ट वॉज सो अमेजिंग, शी डिसाइडेड टू ऐड पिगमेंट टू इट
and it's the same exact product, but now it's a blush. So you get the same amount of glow in everything, but you also get the color of a blush. I really want to buy all the other shades in this, but this is of course an expensive product. I have it in the shade Love of My Life, LOML, and it's a loose blush, but it has that luminosity to it, and it's just so flattering on the skin for people who do not like blush. They do not want to overdo it, they do not want to over apply. This is the product for you, because this is so like natural, and it's like dreamy, and it's like it's blendable, and it's barely there, but it's there, and it adds the glow, and it's just the best of the best. बहुत खूबसूरत ब्लश है. उसके अलावा हम ब्लश की बात करें तो आई थिंक कि मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स के ब्लशेस वर रियली गुड दिस ईयर. इनके जो क्रीम ब्लशेस थे मुझे वो भी अच्छे लगे थे. दे वर रियली नाइस, स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स. विंटर्स में आके मुझे लगता है कि उनकी क्रीम थोड़ी हार्ड हो गई है, एंड यू हैव टू लाइक वार्म देम अप ऑन द बैक ऑफ योर स्किन to really get that blend. The powder blush, however, it's still beautiful. It doesn't need like good temperature for it to work. They are the right amount of pigment. थोड़ा लगाना चाहें थोड़ा लगाएं, ज़्यादा लगाना चाहें ज़्यादा लगाएं, बिल्डअप कर सकते हैं आप इसको. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. आई पर्सनली रियली लाइक द शेड सिलेक्शन. जो 4 शेड्स उसने निकाले थे वो बहुत अच्छे डिफरेंट यूनिक शेड्स थे. I really did like this launch from her brand, and this is going to be another one from my yearly favorites. अच्छा जनाब, now we'll talk about highlighter. Highlighter में I have 2 cream highlighters to talk about and 3 powder highlighters to talk about. सबसे पहले जो cream highlighter की मैं बात करूँगी, this is from the brand MK Cosmetics, and this is in the shade Golden Beach. जनाब, it's the highlighter I'm wearing today. वैसे मैंने 2-3 तरह के highlighters ऊपर भी लगाए हुए हैं, लेकिन by itself it is the most stunning, the most natural looking, the most gorgeous, like the most gorgeous glow from within, but it's there, and yeah, like दूर से आप देखते हो glass skin वाली feel आने वाला glow. This is the one. It's like gorgeous. I cannot say enough good things about this highlighter. बहुत ज़्यादा long lasting नहीं है. Cream products generally are not as long lasting as powder products. Now I have another product which is exactly the same. Like मुझे बहुत ज़्यादा glittery, बहुत ज़्यादा intense liquid highlighters नहीं पसंद. I enjoy powder highlighters that are like that. Liquid highlighters में I enjoy the ones जो एक glass skin type effect दें. This one from Makeup Revolution, it's the Illuminate and Glow. ये मैंने Vegas.pk से मंगाया था. This is the exact same thing. It's again, it has that pinky undertone, and it just gives your skin a glass skin kind of effect. दोनों like अपनी जगह बहुत हसीन है. ये वाला it's as though it's translucent, even though इसमें हल्का सा beige color है, लेकिन because it's very close to the skin, तो it's as if बस आपकी skin में glow add हो गया, not really any color. This one, however, has a slight pink hint to it, so that's the only difference I can tell you about these two. Otherwise, जो मैंने तारीफ़ें इसकी की हैं वो इसके लिए भी हैं. Like it's a glass skin, bridal glow, beautiful glow from within. यानी वो हल्का सा लाइट रिफ्लेक्ट करने वाला मज़े का जो ग्लो होता है ना, that's the glow that both of these products give you. अच्छा, अब अगर आपने उस तरह के हाइलाइटर की लॉन्जेविटी को बढ़ाना है, लेकिन यू रियली डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम दैट नेचुरल ग्लो, यू डोंट वांट योर हाइलाइटर टू लुक लाइक अ स्ट्राइप, यू वांट इट टू स्टिल लुक वेरी नेचुरल, वेरी हेवी, देन आई रेकमेंड कि आप उसको लेयर कर लें विद दिस गाय. दिस इज़ द एसेंस प्योर न्यूड, एंड ये हाइलाइटर ऐसा है कि ये आपके चेहरे पे स्ट्राइप नहीं देगा. ये हाइलाइटर आपके like it has no glitter in it, it has no particles, छोटे छोटे specks of glitter भी नहीं है इसमें, none of that. It's just that glow, exactly the same thing जो कि मैंने अभी आपको liquid form में बताई, but in powder form. So इसको अगर आप layer कर लेंगे तो this would be the ideal powder to do that with. Now there are 2 powder highlights that are super intense and that I still love somehow. I'm not into super intense highlights. अब वैसे I do enjoy them, लेकिन these ones from Lurella, इसके मैंने 3 shades इकट्ठे कर लिए हैं, but the first one is still the star of the show. This one in Starling is one of the best golden highlights I have ever tried on my skin. Very wet looking. It is very, very like, you can tell someone is wearing a highlight with this. It's not natural at all. But even with that, इस तरह के highlighter में जो बाकायदा in your face kind of highlighter हो, to make it still look wearable and pretty and glamorous in the most beautiful natural way is what this highlighter is. This is like glow on fleek, but it's still somehow very, very stunning and beautiful.
Same goes for the other one that I'm going to talk about. This is from mcgrath. ये international product है, and of course it's a luxury purchase. So ये सिर्फ आप तब लेंगे अगर आप इतने पैसे लगाना चाह रहे हैं हाइलाइटर पे तो. But man, there's something about this formula. चांद से भी आपको कोई देख सकेगा इस ग्लो के साथ. The amount of glow that this product has, there is something so magical about the formula on these. I'm not sure कि इतनी दूर से especially if these swatches are even going to do justice to this highlighter. Like इसके अंदर sparkle of glitter भी नज़र आता है आपको. Like you definitely see the sparkle of glitter, especially in a swatch. But on the face, it just looks, again, your cheeks look wet, and it's a very intense highlighter. Don't take it lightly. It's not for the light of heart. अगर आप बहुत ज़्यादा natural highlights इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा natural highlights पसंद करते हैं तो stay far away, especially at that price point. तो don't take the risk of trying it out. लेकिन अगर आप afford कर सकते हैं, and if you've been eyeing them, तो like they are so gorgeous. They are so pretty and so beautiful. Formula इतना अच्छा है. They are baked highlighters. I love them so much. अच्छा जी, last but certainly not least, I'm going to talk about my favorite brushes of the year. इसमें एक कैटेगरी में तो मैं जिन ब्रशेस की बात कर रही हूँ, they are so expensive. It hurts. It really hurts your soul. I love to spend on luxury makeup every once a while. हमेशा नहीं, लेकिन every once a while I like treating myself to it. So ये obviously मैं beginners को recommend नहीं कर रही. ये मैं किसी को recommend नहीं करी जो brushes पे पैसे नहीं लगाना चाहता. This I only am recommending to those of you who are interested to hear about my review on these brushes and who wants to invest in good brushes. So हम बात करें Scott Barnes brushes की. I got the entire set. आपको सेट में 10 brushes मिलते हैं, लेकिन आज I'm going to talk about the brushes that I think are actually worth it. ठीक है, इसके सेट में से 10 में से 5 brushes ऐसे हैं जो I would recommend. Like even at that price point, जो लोग brushes पे और makeup पे पैसा लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं, I would recommend these to them. सबसे पहले हमारे पास Scott Barnes का 65 फेस ब्रशेज में ये वाहिद ब्रश है जो मैं रेकमेंड करूँगी. बाकी भी बहुत अच्छे हैं. Like there's nothing quite like the Scott Barnes brushes, but you can find alternatives to those आराम से. This one is just so unique, so interesting. इसकी बहुत ही मज़े की शेप है. It's like a fan brush, लेकिन it's a unique kind of fan brush. इसको इस एंगल से अगर आप देखें तो it gets thick in the middle, sides इसकी narrow हैं. This is the perfect, like क्या मैं कहूँ इसके बारे में, no bronzer. जितना भी बुरा फॉर्मूला ब्रॉन्जर का contour का, there is no product on this earth that you cannot blend with this guy. और अगर अच्छा product हो तो all you need to do literally is and you're done. Like it hugs your cheekbones and your jawline in the most beautiful way. बहुत unique shape है and like they are so well thought. This brush is so well thought. It's amazing. Like it really toasts the edges. इसके बारे में Scott Barnes says कि he made it to toast the edges. Jennifer Lopez का makeup artist है. He's a celebrity makeup artist in the US. And he has his own line. And उसमें से ये brushes मैंने लिए थे. बहरहाल, like you really can toast your edges flawlessly with this brush. अगर आपने एक brush लेना हो from his entire line, this is the one I would recommend. This is really that unique and that like effective that I would recommend it. उसके अलावा आई ब्रशेज हैं, 4 आई ब्रशेज हैं जो मैं recommend करूँगी. The first one is his blender brush. So it's going to be your crease shade. जो भी पहला शेड आप जो blend करेंगे वो इससे करेंगे. And literally again, if you have a good eyeshadow, like for example if you have a Viseart eyeshadow जो वैसे ही अपने आप को खुद ही blend कर लेता है, and you have this brush, then all you need to do is dip into the eyeshadow, go on your eyes and do this, and your eyeshadow would be blended. Trust me on this. That's how good this brush is. So that's the number 62, I think. Yeah. उसके अलावा ये एक और ब्रश है. That is the exact same shape जैसा हमारे पास ये बड़ा वाला ब्रश था जो इसके लिए था, contour के लिए था. This is an eye brush. That's the exact same shape. So ये बहुत अच्छा रहता है for your crease work, for deepening up the socket, for like applying the shadow exactly in the right place. All of these brushes are synthetic, natural hair brushes नहीं है ये. So they are amazing at laying down the pigment, but at the same time ऐसी technology use की गई है इनमें कि they have the properties of real hair as well. तो ये blending के लिए भी बहुत अच्छे हैं. Like I said, जो blending brush है first वाला, it really blends your eyeshadow like nobody's business. Then we have the number 59 and ये है आपका eyeliner brush. And honestly इसका जो angle and tip है, that's like as sharp as a knife.
You literally can get a perfect eyeline with an eyeshadow with something like this. Be it like contouring the sides of your nose, you can do it with this. If you want to contour your lips, you can do it with this. This is an all-rounder, बहुत दफ़ा काम आता है, and I really love this brush. And then this one is a little guy. इस तरह का इनका बड़ा fan brush है for the highlighter. ये इसका छोटा baby है for the eyes. And again, such a unique shape. Like, it's a fan brush, but it's just different. There's something different about the shape of it. And इसके साथ like outer corner banana, and to like really work on the outside of your eyes to have good angles. It's just a joke with a brush like this. अब आ जाते हैं उससे थोड़ा नीचे, ठीक है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा नीचे, ठीक है. I want to give a shout out to Bonanza Satrangi के brushes. इनके brushes again top face के, मैंने पूरा set नहीं try किया, but I got quite a few of their eye brushes as well as their face brushes. इनकी shapes भी interesting हैं, अच्छे ब्रशेस हैं, ब्रिसल्स सॉफ्ट हैं, आपको इस्तेमाल करके चेहरे पे ऐसे नहीं लगता कि ब्रिसल्स जो हैं वो आपको चुभ रहे हों. दिस वन इज़ लाइक एन एंगल्ड कबूकी ब्रश, तो इसका साइज़ भी इतना छोटा है कि इट्स लाइक परफेक्ट फॉर लाइक रियली ब्लेंडिंग योर कंसीलर, इवन फॉर फाउंडेशन, क्योंकि ये काबूकी से ब्रश है. इट्स रियली अमेजिंग टू ब्लेंड योर फाउंडेशन एज वेल. इनका लाइक पाउडर ब्रश, इनका foundation brush, a few blending brushes. I have like 5 or 6 of these and they're all really good. So अगर आप पाकिस्तानी brushes में try करना चाह रहे हैं तो Bonanza Satrangi के brushes, like give them a try, एक खरीद के देख लें. Then I have to like really mention this one. This is from Flaunt and Flutter and इनका ये two-sided brush है. And boy, this is one of the best brush जो मैंने पाकिस्तान में try किया. पाकिस्तानी brands के brushes में से this is the best brush. You get a concealer side and it's so easy to get into like ये sides of your nose and the other side जो कि आपका like kabuki side है. That is amazing to like buff your foundation in. So बहुत soft bristles हैं, बहुत अच्छा blend करते हैं, flawless blend करते हैं, आपके brush strokes नज़र नहीं आते foundation blend होने के बाद, धोने से बाल shed नहीं होते. Like these are really high quality brushes. And अगर आपने पूरा set या कुछ ना लेना हो तो सिर्फ एक ये ले लें, especially during the sale अगर ले लेंगे तो it's like really affordable and totally worth the money. I highly suggest it. उसके बाद this is another slightly expensive one. This is the Inglot 20T. This I recommend if you are into cream contouring. अगर आप cream contouring करते हैं तो this is the perfect brush. Like the other one, because वो थोड़ा चौड़ा है, the Scott Barnes one, so that's amazing for like cream bronzing and like powder bronzing. This one, जब आपने वाकई में shadow create करना हो तो there's nothing quite as precise as this brush. I really love this brush as well. और अगर obviously आप थोड़े से affordable route में आना चाह रहे हैं and you don't want to go as crazy as Scott Barnes, then I do highly suggest this one. Speaking of tools, I have one last product to talk about. This is the Go Micro makeup blending sponge, a dupe for the Tati Beauty Blender. Full Tati Beauty shut down हो गया a few months ago and they no longer sell that product. So this is the next best thing, the Go Micro sponges. जो कुछ आपको Blenderful से मिलता था exactly वही कुछ आप इससे कर सकते हैं. You can do everything with it, whether it's like cream products, powder products, liquid products, जो कुछ आपने करना है, you can do your entire face with it. Very easy to clean, very quick to dry. Go Micro के makeup removing sponges भी बहुत अच्छे हैं. उसके अलावा of course Beautify by Amna के beauty blenders are the best beauty blenders available in Pakistan, and that's all I use now. But yeah guys, these were my yearly favorites from the categories of face, complexion, cheeks, tools, all of that. I really hope you guys enjoyed this video despite it being so long. I cannot wait to sit down and film part 2 for you. I really hope you guys enjoyed it. जैसे मैंने शुरू में कहा, please let me know your favorites in the comments as well. I'm dying to know. So please let me know. It would be a fun conversation. And yeah guys, that is it for today's video. I will see you guys in my next one. Allah Hafiz.